Faculty at Ashank Desai Center for Policy Studies at IIT Bombay. Before I begin, really want to thank Pradeep ji. We started this, I think, last year, but even before that, a lot of discussions कि कुछ करना है, और I think momentum is gathering. So, full support to this initiative. Thank you so much for putting this together once again. मेरा टॉपिक थोड़ा अलग है in the sense कि I'm trying to understand more closely what's happening with the entertainment industry and particularly work. I'm not done any sort of ethnographic work of myself in Bihar, so I'm relying on other people's work. So I'll cover 4 to 5 things today in my presentation. One is that I'm going to try and give you a sense of because of digitization, or whatever term you want to use, digitalization, because of this there is considerable disruption across several sectors, right? And entertainment is one of those sectors. And then we'll move to looking at and examining, for instance, what's happening in Bihar, right? And perhaps at the end, I'd like to throw some questions so that we are provoked enough, right? So that we have some discussion, right? So these are a few points that I'm going to discuss. As I said, digitization, the disruption of that. There's a whole lot of churning happening in the music industry, right? And then consequences of this. So one interesting thing about the whole, I'm going to use the term digital economy, right? So ये जो process है, ये भी digitization का ही एक process है. COVID के समय जो Zoom use कर रहे थे, right? That's also digitization. But one interesting aspect of the digital economy is that it was born global. Right? इसका क्या मतलब हुआ born global? Born global क्योंकि ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसका इम्प्लीकेशंस ग्लोबल इम्प्लीकेशंस था. जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बोलूँगा कि यदि आप गूगल यूज़ करते हैं, और हम लोग सब यूज़ करते हैं, राइट? गूगल भगवान ही है वो अभी हमारे लिए. सो व्हेन वी यूज़ गूगल, मोस्ट ऑफ व्हाट वी लुक इन फॉर गूगल इज ऑल लोकेटेड एट द बैक एंड. एक सर्वर रहता है, राइट? वो सर्वर अभी तक कुछ सालों के पहले तक वो सर्वर कहाँ रहता था? Mostly it was located in US. Right? So most of the information, data, everything that we use in this digital economy is all located not in India, not in Bihar, not in Muzaffarpur, not in Darbhanga. It's located, very far away, 10,000 miles away, right? So the nature of this economy in that way, not the front end, the back end, is mostly a really global economy, right? So हो क्या रहा है कि लास्ट 5 to 10 years, यदि आप देख सकते हैं तो थोड़ा ये जो 5 कंपनी मेंशन्ड है, सबको मालूम होगा इनके बारे में, राइट? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, अल्फाबेट इज योर गूगल, राइट? फेसबुक, राइट? In 2009, these companies were not even listed in the global market exchange, right? New York Stock Exchange. तो ये इतने प्रोमिनेंट कैसे हो गए? 2009 से 16 से 19 देखिए, राइट? यू कैन सी दैट दे आर लोकेटेड द टॉप 5 कंपनीज, राइट, इन 2019. सो हाउ डज अ कंपनी विच मोस्टली सेल्स यू एडवर्टीजमेंट, गूगल क्या करता है? आपका डेटा लेके एडवर्टीजमेंट बेचता है, राइट? एक एडवर्टीजमेंट बेचने वाला कंपनी दुनिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे हो गया, राइट? I'm not going to get into that, but it's a question that you should think about. Right? And then if you look at, even China is interesting, Tencent, Alibaba, ये सभी companies उभरे हैं. Europe is far behind. Most of them have not gone into the digital sphere. My point here, one slide, is that there's a huge amount of shift happened in the global economy in the last 20 years. 20 साल में बहुत change हुआ. जो बड़े ऑयल कंपनी थे उनको भी ये पीछे कर दिया, राइट? बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑयल कंपनीज आर नो मोर इन दिस टॉप 15 लिस्ट, राइट?
So what is happening, right? And what are the implications? So industry after industry is getting rapidly digitized, right? Music, movie, book and journal publishing, newspapers, software, social media, right? Automotive, right? अब बोलते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर का क्या कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है, right? आप यूरोप यूएस में जाइएगा तो आपका सर्विसिंग जो होता है गाड़ी का वो सॉफ्टवेयर सर्विसिंग होता है, right? 50% of the way that your car works, right, जो चलता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा चलता है, right? So all these companies are being deeply impacted by digitization. And there is just one small note I made at the bottom. More information is being generated every year than in the last 5,000 years, right? उसका क्या यूज है वो अलग क्वेश्चन है, but there's a lot of information being generated across the world. Right? So there is really a digital revolution happening. Right? If anything that can be digitized, then it will be digitized. Right? तो इसको तीन तरीके से देख सकते हैं. एक कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, राइट, एंड आई विल गेट टू म्यूजिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डेमोक्रेटाइज्ड हो रहा है, राइट. सबके पास करीब करीब कोई डिवाइस है, या तो फ़ोन है या आपको फ़ोन चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए एक्सेस, राइट. और यदि आपकी मीठी आवाज़ है और आप कुछ गा सकते हैं तो वो तीनों चीज़ मिला के आप गाना कहीं भी दुनिया में कहीं भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहीं और सुन सकता है, राइट. सो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जो बहुत आसान है इंटरनेट के द्वारा चीज़ों को मिलना, हासिल करना. और ये दोनों चीज़ कनेक्ट हो रहा है व्हाट इज़ कॉल्ड ये सर्च इंजन से, राइट, सप्लाई एंड डिमांड, राइट. मैं पवई में बैठ के, दरभंगा में बैठ के, मुजफ्फरपुर में बैठ के कुछ लिखूंगा तो न्यूजीलैंड में बैठ के, साउथ अफ्रीका में बैठ के, फ्रांस में बैठ के वो इसको पढ़ सकता है, राइट. अद्भुत बात, राइट. So just one slide on what we are calling digital goods या information goods, right? तो एक एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा कि फिजिकल बुक और ई बुक में क्या अंतर है, right? एक आपको जैसे आप लैपटॉप खोले तो आप किताब पढ़ सकते हैं अपने लैपटॉप, right? और शायद आपकी बैग वगैरह में भी किताब होगी, तो आप किताब और ई बुक को साथ में रखेंगे, बगल में रखेंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों से आप वही चीज़ पढ़ रहे हैं. सपोज शेक्सपियर की कोई किताब आपको पसंद है, दोनों में वही लिखा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत ही अंतर है, क्योंकि फिजिकल बुक को प्रोड्यूस करने में काफ़ी मेहनत है. उसको आप एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, तो जो इकोनॉमिक्स है प्रिंटिंग प्रेस का और फिजिकल बुक को प्रोड्यूस करने का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एन ई बुक, राइट. And there lies the tale, there lies the lesson for the digitization process, right? The economics of things is being broken, right? When I say economics of things, मतलब एक किताब है, उसमें कुछ लिखा है, लेकिन दोनों चीज़ को सेपरेट कर दिए, क्योंकि आपको केवल इंटरेस्ट है जो चीज़ लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मीडियम में लिखा है तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं. So information economy is a separate set of economic assumptions distinct from a physical product, right? Non-rivalrous. Just दो तीन बात है इसमें, फिर I'll move on to my rest of my presentation. Non-rivalrous versus rivalrous, right? For instance, यदि मैं इस सीट पे बैठूंगा तो एक ही आदमी बैठ सकता है. यदि if I'm maybe thinner, maybe two people can sit, right? But now because I'm projecting this here, आप लोग सब कोई जो इस ऑडियंस में सब लोग देख सकते हैं, तो ये नॉन राइवलरस हुआ, राइट. आप जो सीट पे बैठे हैं वो राइवलरस प्रोडक्ट, राइट. दिस इज द डिफरेंस, राइवलरस वर्सेस नॉन राइवलरस, राइट. और देयर इज एन इकोनॉमिक्स ऑफ अबंडेंस वर्सेस इकोनॉमिक्स ऑफ स्कैर्सिटी, इन द सेंस कि जितना हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा, जितना हम इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे इसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, राइट. डिप्रिशिएशन होगा. सो थर्ड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन
can be produced, stored and distributed at almost zero marginal cost. इसको यदि आप सबको यदि रुचि है, इंटरेस्ट है, तो मैं अपना स्लाइड आपको सब शेयर कर सकता हूँ. And cost to me is almost zero. Right. So this is what marginal cost is. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा. Right. इस लैपटॉप को एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी टाइम और इकोनॉमिक्स लगेगा. So this is basically how the digital economy is completely disrupting the older economy. These three things, among others, right? Non-rivalrousness, economics of abundance, and zero marginal cost. Right? So music industry पे आते हैं. Right? हमारा जो typical older music industry है, उसमें these are the parts that you usually have faced, right? Your author, this is publishing, which is quite similar to music industry. You have your author at one end and you have a reader at the other end, right? In between there's a publisher, there's a book and the retailer, right? होता क्या है कि most publishing industry rest करता है star author पे, right? इसका क्या मतलब? For instance, 93%, right? 93% of all books sold fewer than 1,000 units, right? And accounted for only 13% of all sales. मतलब 93% किताबें केवल 1,000 यूनिट से उससे कम ही बिकते हैं. इसका क्या मतलब? 7% जो किताब है वो 1,000 से ज़्यादा बिकते हैं. So overall bestsellers are only 7% of the titles but 87% of sales. So ये है स्टार ऑथर. इन्हीं पे पब्लिशिंग इंडस्ट्री चलता है, right? So 80 to 90% of authors hardly make any money from their books in the traditional publishing industry. आप किताब लिखिए, शिशिर शाह भी किताब लिखने मुझे भी रुचि है, लेकिन शायद 10-15 लोग पढ़ेंगे, बहुत खुशी होगी 100 लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे इकोनॉमिक्स नहीं बनता है. मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन it will not really fetch me any revenues. So 90% of authors hardly make any money from their work. So one question we keep asking, for instance, is which is better, piracy or obscurity? Right? Piracy say at least you don't get the revenue, but many people might read your work. Obscurity है कि हाँ 15 लोग पढ़े तो फायदा ही क्या? Right? So at least my book is pirated. So music industry is almost parallel with the publishing industry. Again, you have star musicians in the older music industry, aggressive retailers. Right? Till 2000, for instance, music sold only through CDs, entrenched profit center. Right? आप पता नहीं लास्ट सीडी कब खरीदे होंगे. क्लास में पूछता हूँ कि सीडी किसी ने खरीदा है तो कोई हाथ उठाता नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज एम्बैरेस्ड, राइट? आजकल सीडी कौन खरीदता है, राइट? तो उसकी बात बाद में आएंगे. लेकिन म्यूज़िक सीडी यदि आप पहले खरीदे होंगे 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो एक म्यूज़िक सीडी में फॉर इंस्टेंस आपको 15-16 गाने होते होंगे, राइट? उसमें आपको कोई 4-5 गाना बहुत पसंद था, इसीलिए आपने पूरा सीडी खरीद लिया. लेकिन हुआ क्या है उसमें, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, कि 15 गाने आपको म्यूज़िक पब्लिशर बेचा, उसमें आपको केवल 5 गाने की रुचि थी. मतलब 10 गाना आप सब्सिडाइज कर रहे हैं. आपकी रुचि नहीं है, लेकिन आपको खरीदना पड़ रहा है कि क्योंकि वही तरीका ही है खरीदने के लिए, राइट? सो दिस इंडस्ट्री वाज राइप फॉर डिसरप्शन. इंटरनेट से, और डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इंटरनेट से ये डिसरप्शन बहुत हुआ है, राइट? सो ये डिसरप्शन जब होना शुरू हुआ तो जो बड़े बड़े कंपनी थे, सॉफ्टवेयर अलायंस फॉर इंस्टेंस, या Bollywood Software Alliance, Motion Picture Association of, right? So many of these big entities, they began to say, the argument was that digital economy is largely flawed as it easily allows for piracy. Piracy की issue पे हम वापस भी आएंगे, and it's a very interesting question, issue for debate. Right? इनका था कि piracy, digital economy piracy create कर रहा है, इसको बंद करो. Right? और म्यूज़िक इंडस्ट्री यूएस में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा पायरेसी को बंद करने की, लेकिन उनको पता नहीं था कि
there's already writing on the wall. Right. The writing on the wall is that internet is not going to be put back into the, the cat is already out of the bag. उसको वापस नहीं डाल सकते. Now that the cat is out of the bag, how do you deal with a new economy based on a digitization process? So ये लोग lobbying focus, piracy focus, यही इनका मंत्रा था. तो first decade of this century, endlessly ये लोग यही करते गए. Right. And I'll show you one interesting, वो ऊपर वाला थोड़ा लाइट है. आप लास्ट जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि 2010 में कॉपीराइट इज अफेक्टिंग ईच वन ऑफ दीज, मतलब कमर्शियल पब्लिकेशन, कमर्शियल ट्रांसफॉर्मेशन. कॉपीराइट के बारे में भी थोड़ी सी इंटरेस्ट है तो आप समझ जाएंगे. नॉन कमर्शियल एंड सो एवरीथिंग इज अंडर कॉपीराइट. वाई? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट लॉबिंग बाय दिस बिग लार्ज copyright holders, right? So in 1998 there was the Sony Bono Act, right? It's a very interesting story. I won't elaborate on this. Sony Bono एक company थी जो कि बोले कि Mickey Mouse, right, was held by which company? Walt Disney, right? So Mickey Mouse was coming into the public domain in 1998. Walt Disney को ये बहुत परेशानी होने लगी कि right, if Mickey Mouse comes into the public domain, everybody, any Tom, Dick and Harry will start, manipulating Mickey Mouse, right? And make changes. तो Walt Disney क्या किया? US House of Congress गया, बोला कि ये please copyright के term को आप 20 साल और extend कर दीजिए. That's not, one company going to House of Congress. And House of Congress obliged. Why do you think they obliged? देखिए, क्योंकि ये भी आयरनी है कि यूएस जैसे इकोनॉमी में दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा उनको नफ़ा मिलता है एक्सपोर्ट से, क्योंकि सारे चीज़ तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं चाइना से. वो क्या है? दो चीज़. नंबर वन इज़, यू कैन गेस इट, डिफेंस, राइट? सो Egypt and Israel and Pakistan and India, we have to keep fighting so that we keep on getting all those planes. But the number two is very interesting. After defense is entertainment. It's ironical, right? We can discuss this later. So you can get killed by entertainment or killed by bombs. So let me go to the music industry. So this music industry is broken. That's my, one central argument today. Why is it broken? Because artists, for instance, have argued that the companies, right, these middle companies, they always own the copyrights, right, and they never shared the royalty in a true sense, right? You barely knew how much of your music got sold. तो आपको पता ही नहीं है कि यदि आपका 100 एल्बम सेल हुआ है तो आपको कहाँ से रॉयल्टी मिलेगा. IP control was very excessive, as I just showed you. Copyright. इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन को भी प्रॉब्लम था क्योंकि उनके म्यूजिकल प्रोडक्ट्स को भी रेडियो स्टेशंस में प्रमोट नहीं किया जाता था, क्योंकि रेडियो स्टेशंस कौन ओन करता था? बड़े कंपनीज. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, CD म्यूजिक वाज ऑलरेडी बंडल. So, combination of these four things and more, the artist was never at the center of any music making. Right? A sad thing to say. Right? So there is clearly, with internet, the flip side of all of this is what is very interesting, and which I'm going to get to, is that they arose really a market for local music. Right? So एक तरह पूरा आपका पुराना इंडस्ट्री ब्रेकिंग पॉइंट पे है, ब्रोकन है, काम नहीं कर रहा है, आर्टिस्ट को ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरी साइड समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग. So for instance, I'll just show you a graph and then we'll move on, because I want to also we can have some time for questions. So your typical, demand and supply equation mein, price E and QE, right? This is where you would like your product to be sold, right? When demand and supply meets each other, right? The complicated nahi hai. But there is also a substantial unmet demand. If you lowered your prices,
राइट, वो पीई को यदि नीचे करेंगे, राइट, तो वो डिमांड, अनमेट डिमांड आपका वो क्या कहते हैं उसको, ट्रैप कर सकते हैं. बट क्योंकि इतना प्राइस डिफरेंस है बिटवीन पीई एंड पीपी, राइट, तो वहाँ पायरेट आते हैं कि बॉस आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, आई एम गोइंग टू सेल यू म्यूजिक एट अ लोअर प्राइस. Forget about the quality issues, you will at least get access to some music that you like. So there's a huge price differential, and because of this, your global industry, music industry, is suffering. They cannot really address this, demand for music in local areas. Right? So there is the emergence of local music. Right? So there were 3 phases. I'll go through it. 5 minutes होगा अभी? 2 minutes. Oh, all right. So you have basically 3 phases that we talk about: the cassette phase, CD phase, and more recently, the 2012 onwards, the internet or pen drive, etc. Right. So, in particular, I'm going to look at what's happened to Bhojpuri music. Right. Cassette and CD phase. There's one, well-known scholar, Peter Manuels, who's written about cassette culture. Right. उनकी बहुत ही interesting किताब है उनकी. So cassette culture really introduced and gave the possibility of local music getting sort of taped in that format. Right. So small towns in Bihar, created an independent production hub with enormous potential. इसलिए क्योंकि मुझे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी बड़े बड़े कंपनियों से. क्यों? क्योंकि 3 चीज़ था, जैसे मैंने आपको बोला. इफ़ यू हैड सम टैलेंट, relatively speaking, right, and you are able to have a device, right, so that you can share your music talent, right. So basically, talent, music, and your ability to tape it. 3 things, right? Low-hanging fruit. So music industry evolved very rapidly. Agents were initially employed. Later on, it seems that agents were no longer very crucial. Artists themselves began to sort of promote the music. That's all in these slides. Right. The chief revenue source of the singers and artists was not the music CD sales in itself, but the many shows and concerts commissioned by individuals and institutions. Right. So इनका रेवेन्यू, जो आर्टिस्ट का रेवेन्यू है, वो 2 चीज़ से मेनली आता है. एक, ये अपने लोकल मार्केट्स में सीडी प्रोड्यूस करते हैं अपने गाने का, राइट, एक, और दूसरा कि अपने शोज़ करते हैं. राइट. तो शोज़ के लिए जो आप, आई जस्ट गिव यू वन, फॉर इंस्टेंस, देयर आर 3 सर्कल्स एज यू सेड. प्लीज let me finish. Yes, okay. So Bhojpuri movies, for instance, were made, and many of these movies required production of music. So the Bhojpuri music, for instance, was, if it was X, then the amount of music required was 5 times that, and the amount of, for instance, CD, number of shows that were done were even much more, right? So basically, if I can come quickly to my conclusion, so the people like Geeta Devi, etc., who are from certain lower castes and who made it very rich, right? So there are a lot of success stories, right? So implications for language. This is my last slide, right? So Bhojpuri and Maghi, to kind of provoke us into maybe some discussion. It's, at least according to some of the literature, is saying that depend considerably on the entertainment markets for continued expansion. Right? That even in remote places of India, one's engagement with a new language is coming through music. Right? That's an interesting point that I want to make. Following of Bhojpuri in all its varieties can boast of 150 million speakers in UP and Bihar and a huge migratory presence. Right? So there is a last anytime music, ATM. Right? Charming, seductive, or menacing nakedness of music reveals itself in the perpetual loop within which music has enveloped us, and often we want to constantly listen to music.
So with such an existential relation to music, here is an opportunity, and I had far too many slides to be able to do justice to it. But my main point is that in some ways the disruption of the bigger music industry has created lots of interesting opportunities for artists in Bihar, right, particular section of Bihar, and it's something that we need to probably examine more closely. Thank you. Yes, I request the question putter put straight questions. Don't make comment. कहा सीधे सवाल, मैथिली का और भोजपुरी का डिजिटल मार्केट म्यूजिक साइज क्या है? थैंक यू। सर, जो आपका भी विषय था डिजिटल एंटरटेनमेंट मार्केट, उसको आप जेंडर गैप के थर्टिकल ओरिएंटेशन से कहा जाए या डिजिटल गैप से कैसे देखते हैं? Can you expand? सर, वो अभी आपका जो पेपर था डिजिटल एंटरटेनमेंट मार्केट, इसको डिजिटल गैप से कैसे देखते हैं आप? By digital gap, what do you mean? I'm not sure. Infrastructural gap, digital infrastructure, electricity. सर, इसको कास्ट, जेंडर या क्लास से कैसे देखते हैं? Are you talking about digital divide? Digital divide. डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप, डिजिटल लिटरेसी, तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है। म्यूजिक इंडस्ट्री का, डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री का साइज क्या है? डिजिटल डिवाइड का नाम है क्या? दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप है, डिजिटल लिटरेसी है। आप बिजली खत्म हो गई, अब बिजली खत्म हो गई, अब डिजिटल गैप खत्म हो गया। I have also one question. Can I? So, this is related to the data protection, because the way we are generating the data, how we are also able to protect the data, that is the biggest challenge with India.